हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिग्वं वसो मम। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो। ओम सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो द्वादशैतानि नामानि यापते चुनियादपे विद्यारम्भे विवाहिश्च प्रवेशे संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः इति। स्वस्ति वचनम्। Coming closer, you do the Ganesh Puja. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirviganam Kurme Deva Sarvakaryeshu Sarvada Ekdantaye Vidmahe Vakratundaye Dhimahi Tanno Danti Prachodayat. Premise Bol Shri Ganapati Bhagwan Ki Jai. Om Gam Ganapataye Namaha. Dhyanam Samarpayami. Om Gam Ganapataye Namaha. Avahanam Samarpayami. Om Gam Ganapataye Namaha. Asanam Samarpayami Namahagum. Om Gam Ganapataye Namaha. Padayo Padayami Namahagum. Om Gam Ganapataye Namaha. Hastiyo Argyam Samarpayami Namahagum. Om Gam Ganapataye Namaha. Mukha Achmanyam Samarpayami Namahagum. Om Gam Ganapataye Namaha. Divyasnanam Samarpayami Namahagum. Om Paya Prithivyam Paya Oshadisho Payo Divyantarikshe Payodaha Payasuti Pradhisha Santu Mahyam. Om Gam Ganapataye Namaha. Payasnanam Samarpayami Namahagum. Madhu Sharkara Samayuktam Snanartvam Pratigrihyata. Om Gange Yamane Chaiva Godavari Saraswati Narmada Sindhu Kaveri Jalyasmin Smriti. Om Gam Ganapataye Namaha. Snanam Samarpayami Namahagum. Om Mudakarata Modakam Sada Vimukta Sadakam Kaladharavatam Sakam Vilasiloka Rakshakam Anayake Kanayakam Vinasite Vadhetikam Natashubhashunashakam Namamitam Vinayakam Natetarati Bhikaram Navoditarka Bhasaram Namatsurari Nirajanam Natatika Padudharam Sureshwaram Nidheshwaram Gajeshwaram Ganeshwaram Maheshwaram Tamashraye Paratparam Nirantaram Samasta Loka Shankaram Nirastadeta Kunjaram Dare Darotaram Varam Vare Bhavaktram Aksharam Kripakaram Kshemakaram Mudakaram Yashashkaram Manaskaram Namaskritam Manaskaromi Bhaswaram. Om Gam Ganapataye Namaha. Asanam Samarpayami Namahagum. Om Yena Baddho Baliraja Danavindro Mahabalam Tena Tvam Apipatnami Rakshe Machalam. Om Gam Ganapataye Namaha. Rakshasutam Samarpayami Namahagum. Om Gam Ganapataye Namaha. Upavastram Samarpayami Namahagum. Om Shrikanna Chandanam Divyam Gandadhyam Samanoharam Vilepanam Surasreshtaha Chandanam Pratigrihitam. Om Gam Ganapataye Namaha. Gandham Dharayami Namahagum. Om Sinduram Shobharam Raktam Saubhagyam Priyavardhanam Kamadam Mokshidam Jaiva Sinduram Pratigrihitam. Om Gam Ganapataye Namaham. Sinduram Kumkum Samarpayami Namahagum. Om Gam Ganapataye Namaha. Akshatam Samarpayami Namahagum. Om Gam Ganapataye Namaham. Chakavicane Chanamo Duncha Varuthine Chanamo Surtasenai Chanama Jai Chahananyai Cha
प्ररोहन्ति पुरुषः पुरुषस्परि यवानो दुर्वे प्रतनो सहस्रेण च तेन च समर्पयामि यादिनी सुगन्धीनि मालित्यादिनि वै प्रभो मया ऋतानि पूज्यानि पूजार्थं प्रतिगृहीता पुष्पं समर्पयामि नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः सिद्धिलम्बोदरस्वामिने नमः नानाविमलपत्रपुष्पं समर्पयामि नमः ॐ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्ध्याद्यो गणोत्तमा आग्र्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम् ॐ गं गणपतये नमः धूपं समर्पयामि नमः ॐ साजं च वर्तिसंयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् ॐ गं गणपते नमः दीपं दर्शयामि नमः प्रसाद ॐ शर्कराकन्दकाध्यानि दर्क्षिराङ्घृतानि च आहारं वक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिक्रेताम् ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ॐ गं गणपतये नमः नैवेद्यं समर्पयामि नमः ॐ भू ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ गं गणपतये नमः नैवेद्यं समर्पयामि नमः ऋतुफल समर्पयामि नमः ॐ पुङ्गिफलं महादिव्यं दलयितं एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीताम् ॐ गं गणपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि नमः ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ॐ गं गणपते नमः नीलाञ्जनज्योति समर्पयामि नमः ॐ शुभं भवतु कल्याणं भवतु मङ्गलं भवतु प्रार्थना ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकटाय जगत्ताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते प्रेम से बोल श्री गणपति भगवान की जय अनेन पूजनेन श्री गणपति देवतां प्रियंतां नमः भगवान की जय वरुण देवता ओम बम वरुणाय नमः वरुण देव भगवान पूजन ओम जंबकाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् महावरुण देवाय नमः ध्यानं समर्पयामि नमः ओम बम वरुणाय नमः तीर्थराजाय नमः आवाहनं समर्पयामि आसनं पाद्यं समर्पयामि नमः अर्घयो अर्घयामि नमः मुखयाचमनं समर्पयामि नमः सर्वांगे स्नानं समर्पयामि नमः
पंचामृतमहास्नानं समर्पयामि नमः। गं पंचामृतमन्त्र पंचामृतं शर्करा समायुक्तं सर्वांगे स्नानं समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतिधारयामि नमः। प्रजापतिर्व्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं वतिमुञ्च यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतिधारयामि नमः। यज्ञोपवीतिधारयामि गन्धं धारयामि नमः। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रता तेन देवाजन् गंधम धारयामि नमः। ओम अक्षतां कुमकुमुक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या। ओम बिल्विने च कवचने च नमो वर्मिने च वर्धने च नमो बिल्वपत्रं दुर्वां कुरान् समर्पयामि। ओम बम वरुणाय नमः। ओम बम प्रचेतसे नमः। ओम बम स्वरूपिणे नमः। ओम बम अपाम्पतये नमः। ओम बम पाशहस्ताय नमः। ओम बम वरुणाय नमः। ओम तीर्थराजाय नमः। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम सामवेदाय नमः। ओम अथर्ववेदाय नमः। ओम पुराणाय नमः। ओम वेदव्यासाय नमः। ओम वसिष्ठाय नमः। ओम उपवेदाय नमः। ओम सीतारामाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। स्थानदेवाय नमः। वास्तुदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वदेवी देवता नमो नमः। धूपमाग्रापयामि। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृता पुरो तदस्व यद्वैषां पद्भ्यागं शूद्रो अजाय। धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च। धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेदयामि नमः। ओम नैवेदयामि नमः। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समाना मध्ये मध्ये पानी आचमनं समर्पयामि। नाभ्यासिदन्तरिक्षं जिष्णोऽध्यो समवर्तथा पद्भ्यां भूमिर्दिशः। नैवेद्यं समर्पयामि आचमनं ताम्बूलफलं फुगीफलं महादिव्यं नागबलिदलयुतं मेलालिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहतां। ताम्बूलफलं दक्षिणां जदुभ्यं कर्पूरनीराजनं ज्योतिः। कदलीगर्भादिसम्भूतं कर्पूरां च प्रदीपितम् आरातिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवम्। इदाग्वं हविर्गण मे असुरशविर्गण। आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि पयोरे त्वस्माजधत्ततः। ओम बम वर्णाय नमः। प्रार्थना। ओम देवदानव संवादे मत्यमानो महोदधौ उत्पन्नास तदा कुंभो विधृतो विष्णुना स्वयं। ततो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि तितां। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठितां। शिवस्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा। सानिध्यं कुरु मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम हिरण्यसिंहं वर्णं प्रपद्यं तीर्थं मे देहि याचता।
यन्मया भुक्तं साधूनां पापे वयश्चापतिग्रह यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतं तन्ना इन्द्रो वर्णो बृहस्पति सविता च पुनन्तु पुनः पुनः ॐ जम्बकाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः तीर्थराजाय नमः पूजनं करिष्ये नमः इति पूजनेन श्रीवरुणदेवतां प्रियन्तां नमः। बोले वरुण भगवान की। नवग्रह प्रार्थनां। When we do Satnarayan Bhagavan Puja, we also have to do some prayers to Navagraha Devata, seek their blessings and guidance as well. Everyone should at least get a flower and clasp your hands. It's important that all the grahas favor us. Om. And to those as well listening, Navagraha Puja is always important. We don't do detailed Navagraha Puja here, but whenever it's done, it's important for our lives. Om Akrishne Narajasam Vartamano Niveshayan Amritam Mathyancha Hiranyayena Savitarathena Devo Yati Bhuvanani Pashyam Sri Suryaye Namaha Imam Deva Savatnagvam Suvadhvang Mahate Kshatraya Mahate Jeshthaya Mahate Janaraja Hendra Sindriyaya Imam Amushya Putramasye Vishesha Bhomi Raja Somosmakam Brahmanana Vamsi Raja Sri Chandramase Namaha Om Agnirmedha Deva Kukutpatim Pratabhya Ayam Apagum Retagum Sijinvati Shri Mangalaya Bhaumaye Namaha Om Udbudniswayagni Patijagrihi Tvamishta Pute Sagam Sujitamayam Cha Asmin Sadaste Adhyuttarasmin Vishwe Deva Yajmanasya Siddhata Bhumbudhaye Namaha Om Brihaspate Atiyadaryo Radhimadvibhati Kritamajjaneshu Yadidayachhavasa Rituprajatam Tarasmasu Dravinam Dehi Chitrama Om Bring Brihaspataye Namaha Anat Paristutora Sambrahmana Vyashiva Chatram Payasomam Prajapatim Ritena Satrimindriyam Vipanagvam Shukramandhasa Hendrasendramidam Payomritam Madhu Sri Shukraye Namaha Shanno Devi Ravishtaya Apo Bhavantu Bitaye Shamyor Vishravantuna Samsanischaraye Namaha Om Kayanas Chitra Bhuva Duti Sadavridha Sakha Kaya Sajistaya Vrita Rangrahave Namaha Ketum Krinvanna Ketave Pesho Madiya Peshase Samushabdhirajayatam Kalakim Ketave Namaha Japa Kusum Samkasham Kashipeyang Mahadutim Tamorim Sarvapapagnam Pranatu Yasmi Divakaram Dadhi Shankatu Sharabham Kshirodhanava Sambhavam Namami Shashinam Somam Sambhor Mukutabhushanam Dharni Gharva Sambhutam Vidyum Kanti Samaprabham Kaumarang Shakti Hastam Mangalam Pranamamiham Priyam Gukalika Syamam Rupena Patimambudam Saumya Saunagunopetam Tam Buddham Pranamamyaham Devanam Cha Rishinam Cha Guru Kanchan Sannibham Buddhivootam Trilokesham Tam Namami Brihaspatim Himmakundamilabam Daityanam Paramam Gurum Sarvasasa Pravaktaram Bhargavam Pranamamyaham Neelanjana Samabhasam Raviputram Yamagajam Chayamatam Sambhutam Tam Namami Sanischaram Ardhakayam Mahaviryam Chandraditya Vibardhanam Singahika Garva Sambhutam Palashapuspasam Kasham Taraka Grahamastakam Raudram Raudratmakam Ghoram Tam Ketu Pranamamyaham Brahma Murari Sri Purantakari Bhano Shashi Bhomi Suto Buddhascha Guru Shukra Shani Rahu Ketava Sarve Graha Shanti Kara Bhavantu Ganadhipora Kashta Shajida Suto Buddho Gurur Bhagyo So Janandana Rahuscha Ketuscha Parno Graha Kuruvantu Va Purnamano Ratam Sada Bole Sri Navagraha Devata Ki Navagraha Prathanam Jatubhyam Namaha Om Namo
श्री नवग्रहादेवेभ्यो नमः। आदिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिता श्री नवग्रहादेवेभ्यो नमः। छोटा या बड़ा? When we're ready for care home back my little Murti, Monday go claim him. You like the Murti more than me. You know, since I bought the Murti, keep the Murti. He doesn't want me to take it home. It's going to be a big fight for one little Murti. बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय. So today is very important Purnima. Like all Purnimas are important. And this is the first Purnima we're doing with the new location. Bhagwan Satyanarayan have new real estate. He moved. So I guess, here was fitting for him. It's more accessible. And so we're very happy to perform our first Purnima Puja in the new location of Bhagwan Satyanarayan. We're going to make a nice temple for him, with some nice shed and so on, and sucker plant and thing. But in the meantime, we have to settle for this. But I'm so happy we could have him out. He's a family god, Bhagwan Satyanarayan. He's the family lord. People pray to him to have families. I think we know the beautiful katha about him granting the blessing of family to so many people. And he keeps families together. For that reason, one of the things we do before we do a wedding ceremony, Janeo Sanskar, is we do Satyanarayan Puja. Because we ask him to, like we have grown together as a family and blossomed as a family, we ask him to bless your daughter, your son, whoever is getting married, with the ability to have family as well, should they desire to have one. So it's a puja for the home, it's a puja for the community. I grew up, of course, in Guyana, where we perform Satyanarayan Puja in the Matya, in the temple, once a month. The farmers would come and bring their crops to contribute to the katha, feed the community. We will pray for rains. Right now there is a drought in Guyana. Shortage of water, the cows are dying and all these kind of things. But anyway, we pray and ask that Bhagwan Satyanarayan Swami relieve any part of the world for which there is a shortage of food, love, family, water. May he provide all the basic necessities to those who need it. And in our community, we have always prayed for him to keep our families together and to allow them to grow and to prosper. Om Bole Satyanarayan Swami ki Jai, Vishnu Bhagavan ki. Of course, in the temple, we have our beautiful murtis here, smaller murtis, which we do the puja on. And Saligram Puja as well will be done today. Everybody who comes, you'll offer 3 spoonfuls of milk on the Shaligram. However you choose to, one on the murti, 2 on the Shaligram, that's okay. But please don't touch the Shaligram. We have to use that water to drink afterwards. So we ask you not to touch it with your hand. Om Namo Narayanaya. Om Namo Tanpura Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Dhyaye Satyam Gunatitam
गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभावर्णं हरिं नीलवर्णं पीतवस्त्रं श्रीमत्सपत्भूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मधैरपि पूजयेत् ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यमर्तिं नारायणाय सरिसिजा सरिसन्निविष्ट केरवान् करकुण्डलवान् किरीटी हारे हिरण्मयवपुर घृतशङ्खचक्रः श्री सत्यनारायणे नमः। ध्यानं समर्पयामि। आवाहनं रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्याकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ध्यानम् आवाहयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि नमः। पाद्यं पाधयो पाधयामि नमः। अर्घयो अर्घयामि नमः। मुखे आचमनं समर्पयामि नमः। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि नमः। पयः पृथिव्यां पयो सदिषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयो दाः वयस्वदिः प्रदिशः सन्तु मह्यं कामधेनुसमुद्भूतां सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितं दधिस्नानम् ॐ दधिक्राम्डोकारिखं जिष्णुरसस्यवाजिनः सुराभिनमुखाकरत्प्रणायुगुङ्खितारिखत् दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते घृतस्नानं घृतं मिमिक्षे घृतमस्सजो निघृते श्रुतो घृतं वस्सदामनुस्वदमावः मादस्सुवाः कृतं वृषभः वक्ष्यभ्यं घृतस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानं मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवमाधुरिणः सन्तोषदेः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवगोङ्रजः मधुद्यौरास्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यमाधुरिगावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शर्करास्नानम् ॐ अपागुंरसमुद्भय सगुं सूर्यसन्तगुं समाहितं अपागुंरसस्सजो रसस्तम्भो गृह्णामुतममुपयामि गृहीतो सिन्द्राय त्वां जुष्टां गृह्णामि मेघतेजो निरिन्द्राय त्वां जुष्टतमं शर्करास्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानान्ते गन्धोदकस्नानं गन्धद्वारां दुर्दासां नित्यपुष्टां करेशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपवये श्रियं गन्धोदकस्नानं समर्पयामि भगवते श्रीशालिग्रामाय नमः। दुग्धधारेण अभिषेकं पुरुषसूक्तद्वारा हरिः ओं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात प्रतिष्ठादशाङ्गुलं पुरुषाय वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् अतामृतत्वशेषान् हिरण्येन तेरोति एतावानस्य महिमा अथो जायंश्च पुरुषः पारोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पारोस्येह भवत्पुनः ततो विश्वं विक्रामत शासननशने अभि तस्माद्विराजायत विराजो अधिपुरुषः सज्जातो अचरिचिता पश्चाद्भूमथो पुरः पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाख्यं ग्रीष्म इद्मशरब्दिभिः सप्तास्यासन् परितयः त्रः सप्तस्समिधः कृताः देवैर्दकं तन्वानः अबद्धनं पुरुषं पशुं तं यज्ञं परिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देव अयाचन्त साध्यार्षिश्चये तस्मादिगात् सर्वतः
तं प्रसदागिं पशुगां चक्रे वायव्यान आरण्याग्राम्यश्च ये तस्मात् जगात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दागंसि जग्गिरे तस्मात् ऋजुस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभया तथा गावोह जग्गिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यतिरूपकथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहु कावुरूपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरुत्तरस्य यद्वेषः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासिरन्तरिक्षकं शिष्णोर्ध्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दशः श्रोत्रात् तथा लोकाकुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्ता च मुदा जहारः शक्रप्रविद्वान् प्रतिसहस्रः तमेव विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्थायेनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः दासानि धर्माणि प्रतमन्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या शान्तिदेवाः ॐ नमो नारायणाय नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नमो हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आभ जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्ध्यं कामश्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वारथमाद्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपक्वे शिरमा देवी जुष्टां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे सतां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रबध्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यता त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तपवृक्षो तबेल्वः तस्य फलानि तपसा निधन्तु मायान्तरायास्य बाह्यामलक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मुनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि रास्तेऽस्मिन् कीर्तिमिदं ददातु मे श्रुत्तिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतम् अस्मृतं च सर्वानिर्गमे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपूष्णां करीषिणीम् ईश्वरीgwं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्त्रस्य मयि श्रियशयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्धमं श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सुजन्तु स्निग्धानि चिक्ली तव समे गृहे न च देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गला पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमीं लक्ष्मी जातवेदो मावः आद्रां यक्करिणीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमीं लक्ष्मी जातवेदो मावः तामावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दासोऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यस्विचि प्रयतो भूत्वा जुहियादा जपन्महं सूक्तं पञ्चदर्शः श्रीकामः सततं जपेत् महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय विश्वं मैशानम् अमुमशानं सर्वलोकं मैशानम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। 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 स्नानं समर्पयामि। मन्दाकिन्या समानीते कर्पूरा गुरुवासिते। स्नानं कुर्वन्तु देवेश जलैरभि सुगन्धिभिः। स्नानं समर्पयामि। नमः ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी। The whole idea of taking it away to not make an accident. Aryan, stand up. Stand up. Om iti panchamrita mahasnanam iti shuddhodaka snanam maha. Om gandham dharayami namaha gam vastram upavastram veda sukta samayukte यज्ञसाम समन्विते सर्ववर्ण प्रदे देव वासासी प्रतिगृहता. Satyanarayan Katha was written with very simple mantras. These are all Vedic mantras because it was done by very simple people, right? Very, very simple people. And one, yeah. So when you hear these mantras reciting, you may want to know why they're so simple, because it was meant for simple people. And this is written in the Satyanarayan Puja Vidhi, how it should be done. So we offer to him all those pujas. Now we're going to do Chandan. Om iti Chandanam samarpayami namam. Brahma Vishnu Maheshena Nirmitam Brahma Sutrakam Yagyopavita Danena Priyatam Kamalapatim. Om Sri Satyanarayane Namah Iti Yagyopavitam. Sri Khanda Chandanam Divyam Gandhadhyam Sumanoharam Vilepanam Surasrishta Chandanam Prati Grihatam. Sri Satyanarayane Namah Chandanam Samarpayami Namaha. Pushpam Mallikadini Sugandhini Malityadhini Ve Prabhu Maya Hritani Pujartham Pushpani Pratigrehyata. Om Shri Satyanarayane Namah Pushpam Samarpayami. Bade wala. Om. We have Bade wala, medium wala, and chote wala. Bade wala, medium wala, chote wala. Om Sri Satyanarayane Namaha. Pushpam Pushpamalam Chatubhyam Namaham. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya Namaha.
पुष्पमालां जतुभ्यं नमः। अर्चना सत्यनारायण अष्टोशतनामावली। Offer the 108 names of Bhagwan Sri Satyanarayan Ji. And while this is happening, the devotees will throw flowers on the Shaligram and Bhagwan Vishnu. Those who wish to do Archana, you can come closer as well. Om. Any appear, huh? Om Satyadevaya Namaha. Om Satyatmane Namaha. Om Satyabhutaya Namaha. Om Satyapurushaya Namaha. Om Satyanathaya Namaha. Om Satyasakshine Namaha. Om Satyayogaya Namaha. Om Satyajnanaya Namaha. Om Satyajnanapriyaya Namaha. Om Satyanidhaye Namaha. Om Satyasambhavaye Namaha. Om Satyaprabhuve Namaha. Om Satyeshwaraya Namaha. Om Satyakarmane Namaha. Om Satyapavitraya Namaha. Om Satyamangalaye Namaha. Om Satyagarbhaya Namaha. Om Sasatya Saprajapataye Namaha. Om Satyavikramaye Namaha. Om Satyasiddhaye Namaha. Om Satyachutaye Namaha. Om Satyaviraye Namaha. Om Satyabodhaye Namaha. Om Satyadharmaye Namaha. Om Satyagrajaya Namaha. Om Satyasantushtaye Namaha. Om Satyavarahaye Namaha. Om Satyaparayanaya Namaha. Om Satyapurnaye Namaha. Om Satyaushadhaye Namaha. Om Satyashashvataye Namaha. Om Satyapravardhanaye Namaha. Om Satyavibhave Namaha. Om Satyajeshtaye Namaha. Om Satyashreshtaye Namaha. Om Satyavikramane Namaha. Om Satyadhanmane Namaha. Om Satyamedhaye Namaha. Om Satyadhishaye Namaha. Om Satyakritave Namaha. Om Satyakalaye Namaha. Om Satyavatsalaye Namaha. Om Satyavasave Namaha. Om Satyameghaye Namaha. Om Satyarudraye Namaha. Om Satyabrahmane Namaha. Om Satyamritaye Namaha. Om Satyavedangaye Namaha. Om Satyachaturatmane Namaha. Om Satyabhokre Namaha. Om Satyashuchaye Namaha. Om Satyarjitaye Namaha. Om Satyendraye Namaha. Om Satyasangaraye Namaha. Om Satyaswargaye Namaha. Om Satyaniyamaye Namaha. Om Satyamedhaye Namaha. Om Satyavedhyaye Namaha. Om Satyapiyushaye Namaha. Om Satyamayaye Namaha. Om Satyamohaye Namaha. Om Satyasuranandaye Namaha. Om Satyasagaraye Namaha. Om Satyapatapase Namaha. Om Satyasinghaye Namaha. Om Satyamrigaye Namaha. Om Satyalokapalakaye Namaha. Om Satyasthitaye Namaha. Om Satyatikpalakaye Namaha. Om Satyadhanurdharaye Namaha. Om Satyambujaye Namaha. Om Satyavakyaye Namaha. Om Satyagurave Namaha. Om Satyanyayaye Namaha. Om Satyasakshine Namaha. Om Satyasamvritaye Namaha. Om Satyasampradaye Namaha. Om Satyavahanaye Namaha. Om Satyavayuve Namaha. Om Satyashikharaye Namaha. Om Satyanandaye Namaha.
ओम सत्याधिराजाये नमः। ओम सत्यश्रीपादाये नमः। ओम सत्यगुह्याये नमः। ओम सत्योदराये नमः। ओम सत्यहृदयाये नमः। ओम सत्यकमलाये नमः। ओम सत्यनालाये नमः। ओम सत्यहस्ताय नमः। ओम सत्यवाहवे नमः। ओम सत्यमुखाय नमः। ओम सत्यजिह्वाय नमः। ओम सत्यदौष्ठाय नमः। ओम सत्यनाशिकाय नमः। ओम सत्यश्रोत्राय नमः। ओम सत्यचक्षसे नमः। ओम सत्यशिरसे नमः। ओम सत्यमुकुटाय नमः। ओम सत्याम्बराय नमः। ओम सत्याभरणाय नमः। ओम सत्यायुधाय नमः। ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः। ओम सत्यगुप्ताय नमः। ओम सत्यपुष्कराय नमः। ओम सत्याधृदाय नमः। ओम सत्यभामावतारकाय नमः। ओम सत्यगृहरूपिणे नमः। ओम सत्यप्रहरणायुधाय नमः। इति श्री सत्यनारायण अष्टोशतनामावली नमः। ओम पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यं त्वधूपदीपं तदुभ्यं नमः। ओम कमलाय कमलपुष्पाय नमः। धूपमाग्रापयामि नमः। ओम सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पूजानि पुष्पानि पुष्पं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यगृहः उरोतदस्व यद्वैषः। धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातः रक्षो सूर्यो अजायत। मुखादग्निरजायतः दीपं दर्शयामि नमः। धूपदीपनिवारणाय नमः। नैवेदयामि नमः। प्रसाद now. We need 2 big thalis. अभ्यासिदन्तरिक्षगं शीष्णौध्यो समवर्तथा पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकामकल्पयम्। नैवेदयो नैवेदयामि नमः। गुं ॐ नमो नारायणाय। छोटे हैं ना इसलिए ओपन इट अप। नैवेदयो everybody come now. नैवेदयामि नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण 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 जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे नैवेद्यमाचमनं ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणां कर्पूरनीराजनं समर्पयामि नमः चतुर्वर्ती समायुक्तं घृतेन च सुपूजितं निराजनेन सन्तुष्टे भवत्येन जगत्पते
इति निराञ्जनम् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे इति चतुर्वर्ती समायुक्तं घृतेन च सुपूरितं निराजनेन सन्तुष्टे भवत्येव जगत्पते निराजनं जदुभ्यं नमः प्रार्थनाम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् We'll have the Narayan Suktam chanted from the Vedas to bless this ceremony today. Sahana bhavatu sahanau bhunaktu sah viryam karvavahe tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahasra Shirsham Devam Vishwaksham Vishwashambhuvam Vishwam Narayanam Devam Aksharam Paramam Param Vishwatah Paramanityam Vishwam Narayanam Harim Vishwameveram Purushastadrishtam Upajivati Patim Vishwasyatmeshwaragvam Shashvatagvam Shivamachitam Narayanam Mahageyam Vishwatmanam Parayanam Narayana Paro Jyotiratma Narayana Paraha Narayana Param Brahma Tattvam Narayana Paraha Narayana Paro Dhyata Dhyanam Narayana Paraha Yaccha Kincha Jagat Sarve Drishyate Shruyate Piva Antarbahishcha Tat Sarva Vyapya Narayana Stitaha Anantamavyayam Kavigvam Samudrintam Vishwashambhuvam Padma Kosha Pratikashagvam Hridayam Chapyadhomukam Adonishtyavatasyanti Nabhyamuparitishthati Jwala Mala Kulambati Vishwasyayatanam Mahat Santaragvam Shila Vistullambatya Koshasannibham Tasyante Sushuragvam Sukshmam Tasmin Sarva Pratishtatam Tasya Madhye Maha Agnir Vishwachir Vishwato Mukha Sogra Bhukvi Bachantishtana Ahara Majrah Kavi Tirya Gorya Madishayi Rashmayastasya Santata Santapayati Swam Dehamapadalamasaka Tasya Madhye Varnishaka Aniyo Yodhyavastata Nilato Yadamadhyasta Dvinduluke Vabasara Nivarshukavatanvi Pitaba Asyanupama Tasya Aha Shikaya Madhye Parama Atma Vyavastata Sa Brahma Sa Shiva Sa Harihi Sendra Sukshara Paramaswarata Pratagvam Satyam Param Brahma Purusham Krishna Pingalam Udvaretam Virupaksham Vishwarupaya Ve Namo Namaha Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Narayanaya. Shriman Narayan 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 Shriman Narayan 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 Shriman Narayan 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 Shriman Narayan 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 O Satya Narayan 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 Satya Narayan 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 Swami Narayan 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 Swami Narayan 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 Lakshmi Narayan Narayan Narayan
प्रवक्ष्यामि शृण्वध्वां मुनिसत्तमा पुरा उल्का मुखो नामा नृपश्चासीन् महामति जितेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा दिग्ज्ञान संतोषयन् मुधि मार्यतस्या प्रबुद्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्ययस्य व्रतमाचरत् एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेका समागता वानिर्जातं बहुर्धने रनकैकपुरीरिति सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण नावं संस्थाय तीरे जगामान् नृपितं प्रति दृष्ट्वा सा व्रतितं भूपं प्रपच्चा विनयान्विता किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सम्प्रथं पूजनं क्रियते साधु विष्णुर्तुल्यो तेजसा व्रतं च स्वजनैः साधं पुत्राजावापि कामया भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वं कथय्य मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हो ममापि सन्तर्ति नास्ति हे तस्मा जायते ध्रुवं ततो निवृत्य वाणिज्यात् सम्नाधो नृगामः भार्यये कथितं सर्वं व्रतं संतित्तदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ति भवेत् इति लीलावती प्राह पत्नीं साधुं च सत्तमम् एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण बोले सत्यनारायण स्वामी की जय एकस्मिन् दिनवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तुं दिचा भवत् धर्मां परायणाम्. Today's katha is taken from the 3rd chapter of Satyanarayan Bhagwan's katha. As you know, this is a katha that was brought on this earth to help families grow. Naraji went and he came to this earth and he saw the sufferings of people. And he went, he's a sant, he's a saint. So he went to the heavens and he asked Lord Vishnu, Narayan, to give him a remedy. Bhagwan Vishnu says, the first reason for people suffering is because of their own karma, their own doings. We are not suffering because of others' doings. And the reason for our happiness as well is because of our own doings. So in general, whatever consequences we face in life, it is our artwork. Naraji says, what is the remedy for this sorrows that people are experiencing? And Bhagwan Sri Satyanarayan says people must be more prayerful, and one of the ways in which people can connect more to God is through Satyanarayan Puja, and to sit and to pray and to ask the Lord's blessings. This is just not a puja, this is a procedure to help and assist in the growth of your spiritual life.
your material life as well. Satyanarayan Puja is done on full moon especially because he is the Lord of truth. Satya barabar tapanahi jut barabar pap. The truth is always full. The truth is always very powerful. And we pray that he give rains and crops and the basic necessities to those who require them. Narad came to this earth and he brought the power of the Satyanarayan Katha. It was done by many people and it is still being done today. In the third chapter of Satyanarayan Katha, we hear about Ulka Mukh. सूजी बोली कि हे मुनिये, अब मैं इसी आगे की कथा सुनाई हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो. Suji Maharaj, who is the narrator of this katha, it was done in Naimisharanya, a forest which is still there today. Dhyan Purvak Suno, and he says everybody must listen very attentively. So all of you here as well, you must listen very attentively. पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था. वह बड़ा ही जितेंद्र एवं सत्यवादी था. There was once a king by the name of Ulkamukh. He was a king endowed with a lot of good values, and he always treated his people very well. वह नित्य प्रति मंदिरों आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था. He always went to the temples and performed pujas and give dan to the brahmanas. उसकी रानी बड़ी प्रतिव्रता और सुमुखी थी. His wife as well was very supportive in his spiritual activities. एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे. One day, at a place called Bhadrashila Nadi, next to the river, they sat and they performed Bhagwan Satyanarayan Puja, the king and his wife. उसी समय साधु नामक एक वैश्य धनधान से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा. At that time there was a sadhu, a trader, Sadhu Namak, ek Vaishya Dhanadhan. His name was Sadhu, and he came and he witnessed the puja. He was a trader. He came with his boat. He pulled up next to the river, and he saw what was happening. The Sadhu, the trader, the merchant, Sadhu Vaishne नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा. He pulled up and he saw the king and the queen sat and they were praying with such devotion. This is the beauty of Bhagwan Satyanarayan. Not only the poor people pray to him, because sometimes we think only poor people have to pray. The king and the queen sat in devotion to him. When the merchant saw this, he was very moved that, this is a puja, simple puja. The Satyanarayan Puja Vidhi in front here, this is the original Satyanarayan book. You can see the simplicity of the mantras. The boys chanted some very complicated things just now, which is always nice, the Vedas. But Satyanarayan Katha is a katha of simplicity. Simplicity. So when he saw the king and the queen sitting to perform the puja, he said, "Hey Rajan," I assume he disturbed them at the midst of their puja because he doesn't say whether the puja finished here or not. Anya, you're not laughing. He didn't say if the puja finished or not, but he said, "Hey Rajan, आप इतने भक्ति भाव से यहाँ किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा कर यह सब वृतांत मुझे भी बताइए." He said, "Both of you," the rich merchant is saying to the king and queen, "Both of you sat with such devotion and performed this puja. Tell me, what are you doing here?" Raja uski vinay sunkar bola. The king said, "Hey Vaishya, O merchant, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कर और पूजन कर रहे हैं. यह सब हम पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं." The king and the queen says, "We've brought our people with us to sit and perform this puja because it is our desire to have children and for those children to be good children." The sadhu, राजा की बात सुनकर साधु बोला, "महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत को संबंध में सारा विधान बताइए ताकि मैं भी यह व्रत करूं." And the merchant said at that point in time, "Tell me all about it, how you perform it, because I also will perform this vrat
because he didn't have children, so he wanted to have children. So he says, I also will perform this vrat. मेरे भी कोई संतान नहीं है. I also don't have any children. So just like you're performing it to have children, I want to have children as well. क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरी संतान हो जाएंगे? Will this vrat give me children? अवश्य होगी वैश्य. Of course, the king says. भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते. यह कहकर राजा ने उसे व्रत को संबंध पूरा विधि विधान बता दीजिए. The king says, of course, if you have faith in Bhagwan, Bhagwan can give you anything that you need. Anything that you need in life. And so he told him about the whole thing. Sab kuch jane, he told everything. Now what happened now? The Vaishya felt happy, the merchant. और घर पहुंचकर उसे अपनी पत्नी लीलावती से सब कुछ बताया. When he went home, he told his wife, Lilavati. He says, Lilavati, we don't have any children and we want to have children. So I met this king and he told him the whole story. And the king said, perform this puja. So, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे. This word is very important, करेंगे. So he said, Lord, he had a very big mouth. He said, also, if Bhagwan Satyanarayan Bhagwan give us children, we will also perform this puja. So there he goes. He makes the deal with God. He makes the deal with God that if you give us children, we will perform this puja. उसकी पत्नी यहाँ सुनकर बहुत प्रसन्न हुई. The wife, when she heard it, she felt very happy. इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई. After some time, the wife became pregnant. 10वें माह में, in the 10th month, उसके एक कन्या के जन्म दिया. A girl child was born from both Lilavati and the merchant. यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी. और इस कन्या का नाम कलावती रखा गया. The child name was Kalavati. So the mother name Lilavati and the daughter name Kalavati. And it will go on. If they have more Vati in the family, it will have plenty Vati. एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, Lilavati, one day now after the child was born, hey Swami, my husband, आपने यहाँ था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत का पूजन करेंगे. You had promised, that when our child is born, we'll perform Satyanarayan Bhagwan puja. आप अपने संकल्प को सुनकर यह कार्य क्यों नहीं करते? So why are we not doing this puja now to pray to Bhagwan? साधु बोला कि हे प्रिय, हो my beloved, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे. When our daughter is getting married, then we can perform the puja. So, when you do this to Bhagwan, when you take your relationship and your bad habits that you have with people to God, it becomes a bit different. No? It's a little different. इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया. So the merchant now forgot about his promise. He fooled God. He thought, इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी. एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करके देखा थे. उसी सुद्धि आई कि कन्या सयानी हो गई और अब इसका विवाह कर देना चाहिए. अतः पत्नी से विचार विश्वकर्म से उसके शीघ्र ही कन्या के योग्य पर तलाश के लिए अपने दूतों को भेज दिया. Anyways, the story goes on here to say that the merchant who did not fulfill his promise to God keep putting things off. And a lot of sorrows befell them in the family. So what happened? When the merchant and his son-in-law went now, the girl got married. They went, and one day, as they went there was a king in the particular village. The king, somebody stole from him, and the person was running away in the direction of the merchant and the son, and they were caught and put in prison because, the Lord is going to teach them a lesson.
When they were caught and put in the prison, Lilavati and Kalavati, they wondered where their husbands were, the mother and the daughter. They got a dream, and they performed the puja of Satyanarayan Bhagwan, and then God sent a message to the king to release both of them. The story goes on to tell us that even then he didn't learn his lesson. But I think the point of this all is, this thing called procrastination in life. Procrastination means when you keep putting things off. We always try to make a fool out of people. Promising them one thing. We promise somebody something that, we can do this, do that, do this, do that. Sometimes we don't show up. We don't show up to do anything. And sometimes we take our word back. We keep putting off people. But when you put God off and you put Bhagwan at the back seat, then that becomes a bit of an issue. Now the questions were asked, why did God have to, put sorrows in their life? Because the Lord put both of them into prison. They were falsely accused and they were in prison. So why did God have to do that? You see, if we keep making a fool out of God, or try to think that we can fool God, then what is the world going to think? The world going to think that we have a foolish Bhagwan. That's what they're going to say. We have our God. You can say, Ganeshji, let me pass the exam, I'll give you laddu. You pass the exam, and you say, it's okay. You see, we told him we're going to give him laddu. We didn't give him any laddu. You know what I'm saying? So we make a fool out of people, but we can't do so with Bhagwan. And the message of this whole process is that the habits that we have in life, the way we treat people, the way we treat God is the way we should treat people. Right? You have to hold your word to the best of your ability. You have to treat everyone with respect. We can't treat people like evil and treat God like he is Bhagwan. That type of duality doesn't work in life. So if we have a quality in us that is good, that goodness must be displayed to all forms of creation. Right? That goodness must be displayed to the earth. The same care and compassion we have for the self and for the children, we must give it to nature. The same care and compassion that we give to nature, we must give to the poor. The same care and compassion we have for the poor, we must give to animals, and so on and so forth. If you love, you love. Right? If you love, you love. You have to love all forms of creation. And so the message behind this is that don't try to make a fool out of anybody, because in most cases, we end up being the bigger fools. And so Satyanarayan Bhagwan had to, to tell us in this example here, use him as an example to show us that we all are going to make mistakes in life, and when that happens, God has a way of reminding us of our promises. In the Srimad Bhagavatam, we heard about Satchidananda Rupaya Vishwotpatyadi Hetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Namaha. Tapatraya means 3 sources of difficulties. 3 sources of difficulties. Challenge in our lives come from 3 sources. It is caused by the people around us, it is caused by nature, and it's caused by Bhagwan. People around will cause us a lot of sufferings. Nature, earthquake, hurricanes, and so on will cause a lot of sufferings, flood, drought. And third, Bhagwan. Bhagwan will give you sufferings if you try to make a fool out of him or anybody else. So don't think that, God is there to smile with all the time and, to go only when you have troubles. Let us build a beautiful relationship with Bhagwan every single day in our lives. Build a beautiful relationship with God so that when you stand at his doors, you don't have to tell him anything. You don't have to make a request. You don't have to open your mouth. He knows what is going on inside of you. Our message today is to always be sharing and caring, and all to always remember Bhagwan. Today is Holika Dahan, and I spoke
quite lengthy this morning on the power of today, Holika Dahan, and the purpose of today, where Holika sat not with a magical sari, but she sat to burn Prahalad Maharaj. Any intent that is evil will never survive in front of the doors of God. And tonight, as we burn Holika, let us reflect on the pure qualities we have and how we can preserve them by burning away the impurities of our life. We ask Bhagwan Satyanarayan's blessings on all of you. May you always continue to prosper, and may you grow and embrace your culture, your dharma. May you become sanskari instead of sansari, and may you always be at the feet of Bhagwan. Bole Satyanarayan Swami ki jai. Aarti. Om. Everybody stand for Aarti.
काज सरयू ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 हरि ओम। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की, सत्यनारायण स्वामी की, उमापति महादेव की, श्याम भजु रामचंद्र की, सत्य सनातन धर्म की। सबको जय जय सीताराम।